गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द रेजिस्टेंस फ्रंट। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस ने डेजिग्नेट किया है द रेजिस्टेंस फ्रंट को एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। टीआरएफ बेसिकली एक ऑफशूट है पाकिस्तान बेस्ड एलईटी की, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की है अभी 22 अप्रैल पहलगाम अटैक की। तो टीआरएफ एक टेररिस्ट ग्रुप है, एलईटी का प्रॉक्सी है, अपने आप को सेकुलर और लोकली ड्रिवन ये प्रोजेक्ट करना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में ये इस्लामिक इमेजरी का एक तरह से ओवर्ट जो है अपनी इस्लामिक इमेजरी को ये छुपाना चाहता है। करंट चीफ इसका है शेख सज्जद गुल। टीआरएफ बेसिकली एक रीब्रांडेड फ्रंट है पाकिस्तान बेस्ड एलईटी का, और इसको रीब्रांडिंग इसलिए करनी पड़ी ताकि एफएटीएफ जो है उसकी स्क्रूटनी को इवेड किया जा सके। टीआरएफ हैविली रिलाई करता है लश्कर तैयबा के ऊपर ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर में ये एक्टिव है, और टीआरएफ जो है वो डीपली इंटरट्वाइंड है पाकिस्तान बेस्ड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, तो टीआरएफ एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल प्रोपेगेंडा आर्म भी चलाता है जिसका नाम है कश्मीर फाइट नाम की पोर्टल, जो कि ह्यूमन राइट्स ब्लॉग की तरह दिखाना चाहती है अपने आप को, लेकिन टेररिज्म प्रमोट करती है। और ये झेलम मीडिया हाउस या बाकी के प्रोपेगेंडा आउटलेट्स के साथ भी कोलैबोरेट करता है। तो इंडिया ने तो टीआरएफ को जनवरी 2023 में ही यूएपीए के अंडर बैन कर दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि टीआरएफ जो है वो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है, और ये अपनी बायनुअल रिपोर्ट्स में भी जो है इंडिया ने यूएन की 1267 सैंक्शंस कमेटी को प्रूफ दिए हैं टीआरएफ के ऑपरेशंस और एफिलिएशंस को दिखाते हुए। और यही कमेटी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है सैंक्शंस को इन्फोर्स करने में। तो यूएस ने जो डेजिग्नेट कर दिया है फॉरेन ग्रुप्स जो फॉरेन ग्रुप टीआरएफ को एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है सेक्शन 219 ऑफ इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के अंदर, जिसके अंदर जो है डेजिग्नेशन किसी भी यूएस बेस्ड इंडिविजुअल और एंटिटी को किसी भी तरह का मटेरियल सपोर्ट देने को ऐसे ग्रुप को बैन करती है। अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ब्लॉक करनी होती है कोई भी ट्रांजैक्शन या एसेट्स जो लिंक्ड हो इस ग्रुप से। यूएस ट्रेजरी का ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल जो है वो क्लासीफाई कर सकता है इन ग्रुप्स को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, और ये मेजर्स से जो है आइसोलेट और वीकन किया जाता है ग्रुप को ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 2 स्टेट ऑफ द आर्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल्स को जो है वो कमीशन किया है, आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण, जो इंडिजिनसली बनाए गए हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। तो ये जो है वाइटल एसेट्स होंगे इंडियन नेवी के अंडर वाटर रेस्क्यू और सैल्वेज ऑपरेशंस के लिए। आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण जो है फर्स्ट ऑफ देयर काइंड जो हैं डिज़ाइन और कंट्रोल्ड है, इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड है इंडिजिनसली इंडिया में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर इन्हें बनाया गया है। तो हर जो ये डाइवर है इसको डिप्लॉय किया जा सकेगा अप टू 300 मीटर्स की डेप्थ, और इसको अंडर वाटर सर्वेलेंस और रिकवरी मिशंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और सबमर्ज्ड वेसल्स को लोकेट करने में भी ये हेल्प करेंगे। क्रूशल है ये सबमरीन एमरजेंसीज़ में भी, डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ऑफशोर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन सपोर्ट और अंडर वाटर इंस्पेक्शंस में ये हेल्प करेंगे। तो जैसे जैसे सबमरीन डिप्लॉयमेंट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे रेस्क्यू वेसल्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो इंडिया अभी तक तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर रिलाई करता था सबमरीन रेस्क्यू में, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट और रैपिड डिप्लॉयमेंट हम अपनी खुद की कर सकेंगे रेस्क्यू मिशंस में। शिप्स को बोथ शैलो और डीप सी थिएटर्स में डिप्लॉय किया जा सकेगा, तो इंडिया की डेटरेंस और ऑपरेशनल प्रिपरेटनेस भी इससे स्ट्रेंथन होगी। कंस्ट्रक्शन से जो है इंडिया की इंडिजिनस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, तो इससे लोकल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्ट मिला है। तो आईएनएस निस्तार का नाम रखा गया है 1971 की एक शिप पर जिसने क्रिटिकल रोल प्ले किया था क्रू मेंबर्स को बचाने में एक सबमरीन एक्सीडेंट से। आईएनएस निपुण का नाम रखा गया है हिंदी वर्ड एक्सपर्ट के ऊपर, जो कि वेसल की प्रिसीजन को दिखा रहा है। अब ये इसलिए सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन एक फोकल पॉइंट बनता जा रहा है स्ट्रेटजिक कंपटीशन और इंक्रीज्ड सबमरीन एक्टिविटी का। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार इस साल से एनआईआरएफ जो है वो नेगेटिव स्कोर्स भी अवॉर्ड करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उन पेपर्स के लिए जो रिट्रैक्ट हो जाते हैं जर्नल्स में से इन द लास्ट 3 कैलेंडर ईयर्स। ठीक है, तो एनआईआरएफ क्या है?
इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है असेस और रैंक करने का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। मेथडोलॉजी देता है ये रैंक करने की इंस्टीट्यूशंस को बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। और मिनिस्ट्री जो ये रैंकिंग्स है डिफरेंट कैटेगरीज में निकालती हैं, जैसे ओवरऑल रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंजीनियरिंग, कॉलेज मैनेजमेंट रैंकिंग, फार्मेसी रैंकिंग एट्सेट्रा। तो इंस्टीट्यूशंस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी ए और बी। और ये जो है फिर हेल्प करती है रैंकिंग्स स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में कि वो कहाँ पे एडमिशन उन्हें लेनी चाहिए। तो इस साल की अगर हम जो 2024 की रैंकिंग्स देखें तो उसमें आईआईटी मद्रास का फर्स्ट पोजीशन आया था ओवरऑल कैटेगरी में। आईआईएससी बेंगलुरु का टॉप यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में रैंक आया था। आईआईएम अहमदाबाद का मैनेजमेंट कैटेगरी में, और एम्स दिल्ली का मेडिकल कैटेगरी में रैंक आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिसेंटली कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में हुआ है वो 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये EFTA है क्या? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1960 में जो एस्टेब्लिश हुई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन से, फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रमोट करती है। 7 फाउंडिंग कंट्रीज़ थी इसकी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड एंड यूके। और बाद में फिर आइसलैंड और फिनलैंड और लिक्टेंस्टाइन ने भी इसको ज्वाइन किया। लेकिन करंटली अब सिर्फ 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, आइसलैंड, लिक्टेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। तो ये कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज़ हैं जो प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड को कमिटेड है। तो अब याद रखो ये कोई कस्टम्स यूनियन नहीं है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि अपने अपने कस्टम टैरिफ्स खुद रख सकती हैं मेंबर कंट्रीज़, और फॉरेन ट्रेड मेजर्स भी ले सकती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन EFTA स्टेट्स। ठीक है, इसका हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है EFT काउंसिल, और जो EFTA सेक्रेटरीट है वो जिनीवा में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो है एक नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेटरीज में जो काम कर रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक पावरफुल अनयूजुअल बर्स्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया है, जिसका नाम उन्होंने GW231123 रखा है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स बेसिकली रिपल्स हैं स्पेस टाइम में जो कॉज होती है बहुत ही वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेसेस से यूनिवर्स में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव्स को 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स ने शो किया कि मैसिव एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स ये डिसरप्ट करते हैं स्पेस टाइम को ऐसे इस तरह से कि वेव्स जो होती हैं वो ऑल डायरेक्शंस में फ्रॉम देयर सोर्स जो है वो प्रोपगेट होती हैं। ये जो कॉस्मिक रिपल्स हैं ये ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, अपने साथ इन्फॉर्मेशन भी कुछ कैरी करते हैं कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है इनका, इन वेव्स का, और कुछ क्लू भी देते हैं नेचर ऑफ ग्रेविटी का। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड होती है कि मासेस कितने हैं ऑब्जेक्ट के जिससे आ रही हैं, और स्ट्रेंथ जो है वो कितनी दूर से आ रही है उससे पता लग वो उस पर भी डिपेंड होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो कैटाक्लिस्मिक इवेंट से होती हैं, जैसे कोलाइड हो रहा है अगर कोई ब्लैक होल्स, सुपरनोवे या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स। तो 2015 में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट की थी ग्रेविटेशनल वेव्स पहली बार लीगो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए। और सबसे पहली जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो 2 ब्लैक होल्स जब क्रैश हुए थे एक दूसरे में तब जनरेट हुई थी, लगभग 1.3 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने सक्सेसफुली फोटोग्राफ किया है इंटरस्टेलर कॉमेट C2025N1 एटलस हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हानले लद्दाख से। तो ये IAO है क्या? हानले ऑब्जर्वेटरी है, हानले वैली लद्दाख में लोकेटेड है, 4500 मीटर्स अबव मीन सी लेवल पर। और बेंगलुरु के IIA जो है वो इसको चलाते हैं 2001 से। ड्राई कोल्ड डेजर्ट स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन है इस साइट पर। तो ये हैनले मोनेस्ट्रीज़ की नियरेस्ट नेबर है। क्लाउडलेस स्काई मिलता है यहाँ पर, लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट साइट्स है इसलिए ऑप्टिकल इंफ्रारेड सब मिलीमीटर और मिलीमीटर वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करने की। तो यहाँ पर सोलर पावर प्लांट है, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट है कूलिंग डिटेक्टर्स के लिए। तो हैनले जो है वो एक यूनिक डार्क स्काई रिजर्व भी डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैक्ट फॉर फ्यूचर। टॉपिक सोशल इश्यूज और इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपना सपोर्ट दिखाया है पैक्ट फॉर द फ्यूचर के लिए, और उनके जो की एनेक्सेस हैं ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। तो ये पैक्ट फॉर फ्यूचर है क्या? मोस्ट वाइड रेंजिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कई तरह के न्यू एरियाज़ और इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है।
और जिन पर अलग अलग तरह से एग्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं था। तो ये स्ट्रेंथन करना चाहता है ग्लोबल कोऑपरेशन और एक्सेलरेट करना चाहता है प्रोग्रेस ऑन एसडीजीज। तो ये इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिलीवर कर सकें इन द फेस ऑफ अ वर्ल्ड विच इज चेंजिंग ड्रामेटिकली। तो इसमें पीस और सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल कॉपरेशन, ह्यूमन राइट्स, जेंडर, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस, ये सब जो है वो कवर होते हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर हुई थी जो सितंबर 2024 में, उससे ये अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सिम्बेक्स। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी 32nd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सिम्बेक्स में एज पार्ट ऑफ इट्स एंगेजमेंट विद सिंगापुर नेवी। तो ये सिम्बेक्स क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जो हर साल होती है। 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग नाम से ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो बैटलफील्ड मॉडर्नाइजेशन को की तरफ बढ़ते हुए राम डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी जो है उन्होंने हाई इम्पैक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज की है प्रचंड शक्ति। तो इंडियन आर्मी ने के जो खाड़गा कॉप्स है, फील्ड ट्रेनिंग एरिया जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, वहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है इन्फेंट्री यूनिट्स द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव था कि डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए कि कैसे जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली एनहेंस करती हैं एजिलिटी, लिथैलिटी और सर्वाइवेबिलिटी ऑफ इन्फेंट्री फॉर्मेशंस। ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ये पार्ट है इंडियन आर्मी के ब्रॉडर इनिशिएटिव की, जिसको हम ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is the resistance front. This topic is important for your security and international relations. So the US has designated the resistance front as a foreign terrorist organization and a specially designated global terrorist. And this TRF is an offshoot of Pakistan-based Lashkar-e-Taiba, which had claimed responsibility for the April 22 Pahalgam attack in South Kashmir. This resistance front is a terrorist group. It is a proxy of LET, and while it is trying to project itself as a secular and locally driven, to clear itself of its overt Islamic imagery, the group seeks to fight against what it calls the settler colonial occupation of this region. Its current chief is Sheikh Sajjad Gul, and TRF is a rebranded front of Pakistan's LET. Why they have rebranded? Because they want to evade the scrutiny from FATF. TRF relies heavily on LET's operational, logistical, and financial support. It is active in various modus operandi, uh, and it is active in various districts of Jammu and Kashmir. And despite its effort to rebrand militancy as a local movement, TRF remains deeply intertwined with Pakistan-based backed terror infrastructure. TRF runs a sophisticated digital propaganda arm, including the portal Kashmir Fight. It is disguised as a human rights blog, but it promotes terrorism. It also collaborates with Jhelum Media House, which is another TRF-linked propaganda outlet. Okay. So India officially banned this agency in January 2023 under the UAPA. Ministry of External Affairs has consistently highlighted TRF's role as a front for Pakistan-based terror groups, and in its biannual reports, India has submitted to the UN's 1267 Sanctions Committee. We have provided detailed inputs on TRF's operations and affiliations. So this committee is responsible for enforcing sanctions. So what are the implications of US designation of TRF as a terror group? So this US designation of foreign groups as foreign terrorist organizations under 219 section of Immigration and Nationality Act aim to curb their operations and funding. This designation also makes it illegal for any US based individual or entity to offer material support to this group. Any group basically who is designated. American financial institutions must also block any transaction or assets linked to the group. US Treasury's Office of Foreign Assets Control may further classify such groups as specially designated global terrorists. These measures aim to isolate and weaken the group globally, and it can also result in secondary sanctions on foreign individuals or companies which continue to support or conduct business with these designated groups.
So the next topic is INS Nistar and INS Nipun. This topic is important for your security section. So India has commissioned two state-of-the-art diving support vessels, INS Nistar and INS Nipun, which have been developed indigenously by HSL. So these are vital assets for Indian Navy's underwater rescue and salvage operations. So these are the first of their kind to be designed and constructed indigenously in India under the Atmanirbhar Bharat initiative of Ministry of Defence. So they can enable diver deployment at depths of up to 300 meters. They can be deployed for underwater surveillance and recovery missions. They aid in locating submerged vessels. They are also important for submarine emergencies and disaster relief operations, search and rescue operations, offshore resource exploration support, and underwater inspections. Okay, so what are the benefits of it? So with the increase in submarine deployments, having dedicated rescue vessels is critical. Previously, India relied on international collaboration for submarine rescue, and these DSVs allow independent and rapid deployment of rescue missions. These ships can be deployed in both shallow and deep sea theaters, and their presence also strengthens India's deterrence and rescue and operational preparedness in the Indian Ocean region. The construction of INS Nistar and INS Nipun underlines India's shift towards indigenous capability in defense infrastructure. It also boosts local shipbuilding industries. INS Nistar is named after a 1971 era ship, which has played a critical role in rescuing crew members from a submarine accident. INS Nipun, which is derived from Hindi word for expert, emphasizes the vessel's precision. Indian Ocean is becoming a focal point for strategic competition and increased submarine activity. Therefore, their commissioning of INS Nistar and Nipun, Indian Navy will be able to enhance its ability in the monitoring underwater threats and respond to contingencies. So the next topic is NIRF. This topic is important for your governance section. So in the first starting this year, NIRF will be awarding negative scores to higher educational institutions for papers which have been retracted from journals in the last 3 calendar years. Okay, so NIRF is an initiative by Indian government to assess and rank higher educational institutions in the country. It was launched in 2020 in 2015 by Ministry of Education. It outlines a methodology to rank institutions across the country. Ministry releases NIRF rankings in different categories, like overall ranking, university ranking, engineering ranking, college ranking, management ranking. So the institutions are grouped as category A and category B, and it also aims to facilitate the students to make informed decisions about their education and encourage institutions to improve their standards and quality. What are the key highlights of NIRF 2024 rankings? So Ministry of Education released the 9th edition of NIRF in August 2024. IIT Madras retains its first position in the overall category. IISc Bengaluru tops the university category. IIM Ahmedabad tops in the management category. AIMS New Delhi occupies the top slot in medical category. Okay. So the next topic is European Free Trade Association. This topic is important for your international relations and economy section. Union Minister for Commerce and Industry has recently said that free trade agreement between India and European Free Trade Association will be implemented from 1st of October. So European Free Trade Association is an intergovernmental organization established in 1960 by Stockholm Convention. It promotes free trade and economic integration between its members within Europe and globally. So the member countries of EFTA included 7 founding countries: Austria, Denmark, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, and UK. Later on joined by Iceland, Finland, and Liechtenstein. But currently it has 4 members: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland, and they're all competitive economies. It is not a customs union. So therefore the members are set to they're free to set their own customs tariffs and also arrange other foreign trade measures vis-a-vis the non-EFTA states. The EFTA Council is their highest governing body, and the headquarters of EFTA Secretariat is located in Geneva. So the next topic is gravitational waves. This topic is important for your science and tech section. Scientists working with a network of observatories located around the world recently reported that they had detected a powerful and unusual burst of gravitational waves, which they called
GW231123. So, what are gravitational waves? They are ripples in space-time caused by some of the most violent and energetic processes in the universe. Albert Einstein predicted the existence of gravitational waves in 1916 in his general theory of relativity. Einstein's mathematics showed that massive accelerating objects would disrupt space-time in such a way that waves of undulating space-time would propagate in all directions away from the source. These cosmic ripples would travel at the speed of light, carrying with them information about their origins as well as clues to the nature of gravity. The frequency of the wave will depend on the masses of the objects and the strength will depend on how far away the event occurs. The strongest gravitational waves are produced by cataclysmic events like colliding black holes, supernovae, and colliding neutron stars. In 2015, scientists detected gravitational waves for the very first time using LIGO instrument. The first gravitational waves happened when two black holes crashed into one another, and this collision happened about 1.3 billion years ago. So the next topic is Indian Astronomical Observatory. This topic is again important for your science and tech section. Indian astronomers have successfully photographed the interstellar comet C2025 N1 Atlas using the Himalayan Chandra telescope of the Indian Astronomical Observatory at Hanle, Ladakh. So this Hanle Observatory is located in Hanle Valley, Ladakh, and it is situated at an altitude of 4,500 meters above the mean sea level. It is run by Bengaluru's Indian Institute of Astrophysics since 2001. So this site is a dry, cold desert with sparse human population, and the ancient Hanley Monastery is its nearest neighbor. The cloudless skies and low atmospheric water vapor makes it one of the best sites in the world for optical, infrared, sub-millimeter, and millimeter wavelengths. It also features a solar power plant, satellite-based communication systems, and a liquid nitrogen plant for cooling detectors. It is also home to unique dark sky reserve designated by the International Dark Sky Association. Okay. So the next topic is Pact for Future. This topic is important for your environment and social issues. India has reiterated its firm support for the Pact for the Future and its key annexes, the Global Digital Compact and Declaration on Future Generations. So, this Pact for Future is the most wide ranging international agreement covering entirely new areas and issues on which agreement has not been possible in decades. So, it aims to strengthen global cooperation and accelerate progress on the Sustainable Development Goals. It ensures that international institutions can deliver in the face of a world which has changed dramatically since they were created. So, this pact covers a broad range of issues including peace and security, sustainable development, climate change, digital cooperation, human rights, gender, youth, and future generations, and the transformation of global governance. So, this was adopted at the Summit of the Future held in New York in September 2025 or September 2024. So, the next topic is exercise Simbex. This topic is important for your Science and Tech section. So Indian Navy will be participating in the 32nd edition of Exercise Simbex as part of its engagement with the Singapore Navy. So Exercise Simbex is a Singapore-India maritime bilateral exercise which is conducted annually since 1994 when it began as Exercise Lion King. Okay. So the next topic is exercise Prachand Shakti. This topic is important for your security section. So in a major step towards battlefield modernization, RAM division of Indian Army conducted a high impact demonstration titled Prachand Shakti. It is conducted by Indian Army at the Kharga Corps field training area in Uttar Pradesh, Meerut. This exercise focused on the employment of disruptive technologies by infantry units in strike corps operations. The core objective of this event was to demonstrate how such disruptive technologies can significantly enhance the agility, lethality, and survivability of infantry formations engaged in deep offensive missions conducted by strike corps. So this demonstration is part of Indian Army's broader initiative under the Year of Tech Absorption. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.